अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 13 बीएससी एंड फॉर बीएस क्लासेस, और जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया था बोरेन्स का और उनकी प्रिपरेशन करवा दी थी. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल एस्पेक्ट्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेन्स, और जिसमें हमारे पास नंबर 1 है, वो है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी. Thermal stability means when heat is applied on a boranes or a boron hydrides, then what type of product is formed? When we apply it on a diboranes. Today just I am going to discuss the effect of heat on a diboranes, not on a higher boranes, just on a diboranes. Students, keep it in your mind, when we apply a heat to a diborane, under different condition it can give a different products, but all these products are a higher boranes. But when further temperature increases, then boron hydride, which is a diborane, break down and it decomposes and it gives a boron or hydrogen. So first of all, when diborane is heated at 115 degree, this reaction takes place in U-shaped tube. Then we observe it give pentaborane. When diborane heated at 115 degree in U-shaped tube, then it gives a pentaborane with the emission of molecular hydrogen. But when it is heated at minus 78 degree to 100 degree, this condition, here this condition, we have satisfied this condition. When at minus 78 degree to 100 degree it is heated, then it gives a tetraborane. It's a tetraborane. And again, when heated at 100 degree, then it gives a decaborane. And when again at a 300 degree, then it decomposes into boron and hydrogen. Boron plus hydrogen. So simply I have discussed what is the effect of heat on diboranes. When heat is provided under different condition, at 115 degree it gives pentaborane, at minus 78 to 100 degree it gives tetraborane, and at 100 degree it gives decaboranes. And when further temperature increases to a 300 degree, then it will decompose into a boron or hydrogen. So boron and hydrogen are produced under highest condition. These are vigorous conditions. And next is hydrolysis. Students, when diborane is hydrolyzed with water, then only boric acid is produced. So hydrolysis of diborane produce boric acid. It's a boric acid. This product is known as boric acid. Simple. Hydrolysis, when diborane is hydrolyzed with water, with high amount of water, then it produces boric acid. Boric acid is produced here, students. Again next is the combustion. Combustion means burning of a compound in the presence of oxygen. We know burning is occur in the presence of oxygen. When hydrocarbons burnt, it gives carbon dioxide plus water plus heat is produced, students. जब हम हीट अप करते हैं, जब हम बर्निंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो हमें पता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी यही काम होगा, जस्ट लिटिल चेंज है प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पे बोरान है, वहां पे कार्बन है. द बर्निंग ऑफ डाइबोरेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, बट हियर द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस. दिस रिएक्शन हैव अ ग्रेट importance in industry because large amount of energy is produced during this reaction, which is used to start most of the reactions. So when diborane burnt in the presence of oxygen, जब आप डाइबोरेन्स को जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, then it give boric oxide. It's a boric oxide plus water plus large amount of heat is produced. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एनर्जी की मिकदार खारिज हो रही है वो है 2020 किलो जूल, एंड
this energy is twice than the energy is produced when ethane is burnt in the presence of oxygen. ये जो एनर्जी है ये इथेन की बर्निंग से भी हमें क्या मिली है, डबल मिली है. मतलब ये इथेन जब बर्न करते हैं तो उसकी एनर्जी का 2 गुना हमें ये एनर्जी मिली है. सो फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी यू कैन इमेजिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन. और नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स रिएक्शन विद हैलोजन. द अदर रिएक्शन इज रिएक्शन विद हैलोजन्स. स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, when diborane react with halogen mean chlorine, then it gives boron trichloride. It's a boron trichloride, and with chlorine the reaction of diborane is too much fast. डाइबोरेन का रिएक्शन जो हैलोजन मतलब क्लोरीन के साथ है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही विगरस होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, एंड इट गिव्स बोरॉन ट्राइक्लोराइड. एंड इन दिस केस boron trichloride have a covalent bond. All the bond with boron, a boron form with chlorine, all of these bond are a covalent bond. यहाँ पे जितने बॉन्ड होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे आपके पास, कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे. एंड HCl इज प्रोड्यूस, और जो HCl है वो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन गया. लेकिन अगर आप ये रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाएं स्टूडेंट्स, लेट्स चेक द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन. इमेजिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, when diborane treated with chlorine, the reaction takes place at 25 degree only. Very low temperature required to start the reaction. It means reaction is too much vigorous. But when that reactant is treated with bromine, then 100 degree temperature is required. From the condition we observe that at 100 degree the reaction is slow. जो रिएक्शन यहां पे हो रहा है इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन. ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा, बिकॉज हाई एनर्जी रिक्वायर्ड. इसको एनर्जी जो चाहिए वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए. सो इट्स अ फास्ट रिएक्शन बिकॉज रिएक्टिव रिएक्टेंट प्रेजेंट. दिस इज अ स्लो रिएक्शन बिकॉज द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इज अ ब्रोमीन एंड इट्स नॉट अ रिएक्टिव, too much reactive because of its low electron activity, and we know that bromine is found in a liquid form. And next is reaction with halogen. This is a substitution reaction with halogen acid. Just what happened, B2H6 is treated with HCl, this H replaced by halogen atom, then the product become B2H5 and B2H5Cl plus H2 release. यहां पर क्या हुआ, जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो जस्ट यहां से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिप्लेस. ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहां पर क्या आ गया, हैलोजन आ गया. तो आपके पास बना B2H5Cl. ये आपके पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है. दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज रिएक्शन विद अल्कलीज. अब आप रिएक्शन करवा रहे हैं इसका अल्कली के साथ. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विद अल्कलीज इज टू मच विगरस रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है हाइपोबोरेट मिलता है. स्टूडेंट्स अगर आप पोटाशियम लेंगे तो पोटाशियम हाइपोबोरेट मिलेगा, अगर NaOH लेंगे तो सोडियम हाइपोबोरेट मिलेगा, ETC. मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस अंडर डिफरेंट कंडीशंस व्हेन डिफरेंट रिएक्टेंट इन्वॉल्व. जब डिफरेंट रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. सो when diborane treated with potassium hydroxide and this potassium hydroxide in concentrated form, then potassium hypoborate is produced. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोटाशियम हाइपोबोरेट बनने जा रहा है. और अगर नेक्स्ट आप बात करें, इट्स रिएक्शन विद अल्कली मेटल. इट्स सिंपल रिएक्शन स्टूडेंट्स. व्हेन डाइबोरेन or a tetraborane or a decaborane or a pentaborane treated with metal, then it gives simple amalgam. Let's talk about organic chemistry in this reaction. We know that in organic chemistry we have a Discus-Ackley-Manson reduction where we have used a zinc amalgam. So it's a product of a metal with boron, which is known as a sodium amalgam. मेटल का रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के साथ जो हो सकता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बन रहा है वो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एमलगम कंसीडर किया जाएगा. देन इट्स नोन एज अ सोडियम एमलगम. तो आप इसको स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, बोरॉन एंड रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विद सोडियम गिव अ एमलगम टाइप प्रोडक्ट, नॉट रियली नोन एज एमलगम बट एमलगम टाइप प्रोडक्ट. नेक्स्ट नंबर 8, फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड. स्टूडेंट्स इट्स टू मच इंपॉर्टेंट. Diborane when treated with ammonia, we know that
Diborane acts as Lewis acid because in diborane the central atom is boron and we know that boron have a deficiency of an electron. जो boron है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है and we know according to Lewis acid based concept the element, the atom which accept a pair of electron acts as a Lewis acid and which donate a pair of electron acts as a Lewis base. So in this case ammonia acts as Lewis base because it contains nitrogen having a lone pair of electron. But what happened when diborane treated with ammonia? The product form is known as borazole. It's a borazole, students. It's an inorganic benzene. It is known as inorganic benzene. What is the structure of borazole, students? So observe. हम क्या करेंगे? We know that there is a reaction. The electron were donated by nitrogen to a boron. Its structure is like a benzene. It is known as inorganic benzene. What is inorganic benzene, students? यहाँ पे आपके पास आ गया नाइट्रोजन, इसकी बॉन्डिंग बोरान के साथ, यहाँ से भी बोरान के साथ इसकी बॉन्डिंग, स्टूडेंट्स ये देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, बोरॉन, बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन and again boron. Every atom in this structure contain one hydrogen. This compound is, student, borazole. This compound is known as a borazole, students, and it is also known as inorganic benzene. Inorganic benzene, students. So now we have learnt what is inorganic benzene. This borazole is known as inorganic benzene. So students, these are the chemical aspects of borane compounds or a boron hydrides. Okay students, best of luck. Allah Hafiz.